Okay, I am Sanoj here. So last lecture we have learned that is chapter number 1, that is historiography, that is learned from the best. And second chapter we have learned that is historiography, that is Indian tradition. Apart from that, I have explained you that is the history of Indian arts, that is chapter number 4. Today we are going to learn that is a new chapter which is known as mass media and history. This is chapter number 5 of history. Okay, what is mass media? There are two words, that is mass and media. So we need to know that is what is mass and what is media. Mass means aggregation of people. Mass means aggregation of people, and media means that is the mode of communication. So mass means aggregation of people. Media means the mode of communication. So you need to remember that is these two words, that is mass and media. Apart from that, we have to give a brief that is about the newspaper. What is newspaper? Newspaper are thing that is which mainly publishes that is various articles, editorial columns. They print news that is at the local level, national level, as well as that is in the international level. So newspaper that is keeps us updating. That is they keep going on. That is provide that is information that is to the people. Apart from that, you need to know that is various newspapers, that is Bengal Gazette, Darpan, Prabhakar, Kesari and Maratha. अब हम पढ़ते दैट इज ये वेरियस न्यूज़पेपर है जो हिस्ट्री में दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड यू नीड टू नो दैट इज ये सब न्यूज़पेपर कब आया, किन किनों ने लाया और इनका एक एक का रोल क्या था. सो हम लोग ये पढ़ते हैं बिकॉज ये बहुत टाइम एग्जाम में पूछा गया, दैट इज कि एक एक न्यूज़पेपर को आप लोग को एग्जाम में पूछा गया कि यार ये न्यूज़पेपर कब आया था, तो एक एक बच्चों को नहीं आता है. तो आप लोग को यही पढ़ना जरूरी है कि यार ये बंगाल गैसेट कब आया, दर्पण कब आया, प्रभाकर, केसरी एंड मराठा. तो पहला जो आपका न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बंगाल गैसेट. बंगाल गैसेट को लाया किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की. तो आप लोग को इनका नाम याद करना पड़ेगा, दैट इज जेम्स अगस्टस हिक्की. दैट इज बंगाल गैसेट को लाने वाला कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की. आप पेपर में रीड करते हो इनके बारे में. दैट इज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. तो आपको पहला बताना है दैट इज बंगाल गैसेट क्या है? पहला न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ इंडिया व्हिच वाज that is introduced by James Augustus Hickey. Okay, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत अपडेट बताना. और it was published that is in the year of 1780. तो year आपको बताना that is 1780 of January. 1780 that is of January. That is James Augustus Hickey that is introduced this first English paper that is in India which is known as Bengal Gazette. Apart from that, ये जो बंगाल गैजेट है इसका पहला जो नाम था दैट इज इट वाज अर्लियर नोन एज दैट इज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर. ओके, देन इट वाज नेम्ड एज, इसका नाम हम लोगों ने चेंज करके क्या डाला? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर. तो आपको ये नाम तो याद रखना होगा, दैट इज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर. अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अपने पास एक और नया न्यूज़पेपर है व्हिच इज नोन एज दर्पण. दर्पण वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट इज हिज वाज द एडिटर तो बाल शास्त्री जांभेकर. ओके, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, बाल शास्त्री जांभेकर. इन्होंने ये न्यूज़पेपर लाया. ओके, ही वाज एन एडिटर, दैट इज एडिटर था ये दैट इज ऑफ द न्यूज़पेपर दैट इज दर्पण. ये आप लोग को बताना है. और इट वाज स्टार्टेड दैट इज इन मुंबई इन द ईयर ऑफ 1832. तो ये न्यूज़पेपर कहाँ पे लाया गया? दैट इज दर्पण, दैट इज इन मुंबई. आपको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे नाम. दैट इज इन न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है दैट इज इन मुंबई. That is which was started by that is he was an editor. That is editor का नाम था बाल शास्त्री जांभेकर. और it was introduced that is in Mumbai in the year of 1832. अब apart from that आप लोगों को यही बताना that is what this newspaper do. They mainly that is publish all the messages, articles, all the events which has happened that is in India. The third newspaper is that is Prabhakar. Prabhakar is one of the most important newspaper that is which was started by that is Bahujan दैट इज बाहु महाजन. तो इस न्यूज़पेपर को किसने लाया? बाहु महाजन ने इंट्रोड्यूस किया इस न्यूज़पेपर को. तो अपार्ट फ्रॉम दैट फिर लास्ट एक इंपॉर्टेंट दो न्यूज़पेपर है जो एग्जाम्स में बहुत बार आया जाता है दैट इज केसरी एंड मराठा. दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर दैट इज इन द हिस्ट्री बिकॉज इट हैज बीन वर्किंग दैट इज ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स. इंडिपेंडेंस से दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम्स और प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स में दोनों साइड्स में दैट इज ये न्यूज़पेपर ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है. That is prehistoric times as well as post-historic times. और आप लोग ऐसे बोल सकते हो that is pre-independence times and post-independence times. Sorry for that कि post-independence और pre-independence आप लोग ऐड कर सकते हो. That is pre-independence time के पहले और
पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद दैट इज ये दो न्यूज़पेपर दैट इज केसरी एंड मराठा हैज बीन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये दो न्यूज़पेपर को लाया किसने, दैट इज गोपाल गणेश अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग को ये दो नाम याद रखना जरूरी है, दैट इज गोपाल गणेश अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक। सो ये दो न्यूज़पेपर है दैट इज व्हिच वाज स्टार्टेड बाय देम, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन प्लेइंग दैट इज एन इंपॉर्टेंट रोल दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस एज वेल एज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मैंने आप लोग को यही बताया दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ तक आपके लिए बताया। तो पहला है दैट इज व्हाट इज मास मीडिया। तो मास मीडिया मींस व्हाट, दैट इज देयर आर टू वर्ड्स व्हिच इज मास, that is aggregation of people, and media means that is a mode of communication. After that we have learned that is newspapers are that is which keeps us updated, so they provide news of various content, they provide various supplements that is to your people. So आपको यही बताना है, and they also provide that is various news that is starting from the local, national till international level. फिर उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया दैट इज वेरियस न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर्स एग्जाम में बहुत बार आया जाता है, कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर को पूछा जाता है कि कोई एक न्यूज़पेपर के बारे में दैट इज यू हैव टू राइट योर ओन आंसर। तो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया बंगाल गैजेट दैट इज कलकत्ता एडवर्टाइजर व्हिच वाज स्टार्टेड बाय दैट इज जेम्स अगस्टस सिल्की, और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज इन द ईयर ऑफ दैट इज जनवरी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने पढ़ा दैट इज दर्पण न्यूज़पेपर था दैट इज in Mumbai which was started as in 1832 और was started by that is he was editor that is बाल शास्त्री जावड़ेकर। फिर मैंने आप लोगों को एक और न्यूज़पेपर बताया जिसका नाम था प्रभाकर को इंट्रोड्यूस किसने किया, दैट इज बाहु महाजन। उसके बाद लास्ट जो हम लोग ने न्यूज़पेपर पढ़ा जिसका नाम था केसरी एंड मराठा। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर इसलिए मैं बार बार बताऊं बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल प्ले किया, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस एंड post independence, that is these two newspapers has been played a very important or vital role that is in the Indian history. Then last आपको ये mostly एग्जाम से पूछा जाता है, answer the following में, why do we need mass media? Because mass media का और कोई alternate source आज तक तो नहीं है, because आप लोगों को पता है, because why do we need mass media? Because it is a free flow of information. It is a free flow of information that is most of the people get, that is information that is through this medium, that is television or radio. It keeps us updated. Each and every event related to national level or international level, related to sports, related to economy, related to politics, each and everything, trade, agriculture, सब चीजें that is it keeps us updated, that is so we need that is mass media। because बार बार एक ही चीज बताना, बिकॉज दिस आर द सोर्सेज व्हिच कीप्स अस अपडेटेड। और टेलीविजन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इज थोड़ा बहुत टेलीविजन के बारे में थोड़ा बता देना। यस, टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम। रेडियो इट इज नॉट एन विजुअल मीडियम, इट इज जस्ट एन ऑडियो मीडियम, बट बोथ दिस थिंग दैट इज प्रोवाइड अस वेरियस इंफॉर्मेशन और कीप्स अस अपडेटेड। आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हो, दैट इज it is a good source of that is free flow of information that is to the entire masses। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वाइंड अप होता है। लास्ट आप लोगों को एक टॉपिक आएगा दैट इज आर्ट्स, एक लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे बताया गया है दैट इज मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट स्टिल आप लोग को ये पढ़ना जरूरी है, दैट इज मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। दैट इज मास मीडिया आपको बताना दैट इज व्हाट इज मास मीडिया, और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज यू नो दैट इज थ्रू मास मीडिया आप क्या क्या करियर दैट इज यू कैन अचीव, दैट इज वेरियस यहाँ पे ऑप्शंस बताया दिया है। एक बार यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हो, दैट इज बहुत बार पेज नंबर दिया है, दैट इज पेज नंबर 35 और 36 में, दैट इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स उन्होंने क्लियरली बताया गया है, दैट इज न्यूज़पेपर्स बहुत सारे इंफॉर्मेशन बताता है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट इज यू कैन डू दैट इज थ्रू दिस mass media and professional opportunities that is you can involve in, that is you can pursue your career and all। so in short मैं wind up कर रहा हूँ बताकर that is what is mass media, you need to know that is what is mass media। second that is you need to know that is what is newspaper। apart from that मैंने बताया that is this important newspaper, तो आप लोगों को newspaper पढ़ना जरूरी है, that is various newspaper है अपने पास, बंगाल गजट है, दर्पण है, प्रभाकर है, केसरी और मराठा। आप लोगों को केसरी और मराठा को थोड़ा हाईलाइट करना है बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया दैट इज व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, और लास्ट आपको बताना दैट इज मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ओके गाइस।